Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So बच्चों, क्या आपको आपके बेसिक नेसेसिटीज याद हैं? जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग? Right. So we are going to focus on food in this chapter. That's the name of the chapter, food. Okay. So I know I am a vegetarian or non-vegetarian. You have to mention that. And dash is a famous dish of my state. Okay. Now children, हर state की एक special dish होती है. So you have to mention about the special dish of your state. Okay. Now Ritika is on a picnic with her school friends. Let's see what all they have brought to eat on a picnic. Ritika's mother made dhokla for all of them. Rohan's grandmother made pakoras with mint chutney. Ansh's father is a Chinese chef. He gave him noodles and Manchurian. Shreya bought vegetable sandwiches. Priya baked a chocolate cake. Radhika's mother gave her puri and chole. Ali's grandmother gave him biryani. So, children, you saw such a wide variety of food they had, like dhoklas, pakoras, they had Chinese like noodles, Manchurian, they had sandwiches, cake, chole puri and biryani also. So now, different people eat different kinds of food according to their choice, region, availability of food items and age factor. ओके तो ये अलग अलग टाइप के जो पकवान होते हैं, जो खाने का चीज़ें होती है, खाने की चीज़ें, वो लोग अपने चॉइस के हिसाब से खाते हैं. ओके या फिर जहाँ पे वो रहते हैं उसके हिसाब से, या फिर जो फूड आइटम्स अवेलेबल है उसके हिसाब से, या फिर एज फैक्टर से. जिससे छोटे बच्चे जो है जनरली ज़्यादा तीखा नहीं खाते. ओके वैसे ही बड़े जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, दे ऑल्सो डोंट प्रिफर हैविंग लॉट ऑफ स्पाइस इन देयर फूड. ओके सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज फैक्टर. नाउ लेट्स लुक एट इट इन डिटेल. ओके फूड अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. सम पीपल लाइक टू ईट फूड obtained फ्रॉम प्लांट्स. दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. Some people like to eat meat and fish. They are called non-vegetarians. Some people who eat only vegetables and do not eat anything that comes from animals, including milk and milk products. They are called vegans. तो 3 तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जो प्लांट्स से ऑब्टेन होता है, तो उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं. ओके फिर देर आर सम पीपल जो वेजिटेरियन तो खाते हैं बट उसके साथ साथ दे हैव मीट ऑल्सो, दे हैव फिश ऑल्सो. सो दीज पीपल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. और एक तरीके के लोग होते हैं जो दे प्रेफर ओनली ईटिंग वेजिटेबल्स. ओके और वो कोई भी मिल्क कोई भी चीज़ जो एनिमल्स से आते हैं वो नहीं खाते, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स दे डोंट हैव इट. ओके सो दीज पीपल आर कॉल्ड वीगन्स. नाउ फूड अकॉर्डिंग टू रीजन. अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं. सो पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लाइक टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. लाइक इन मध्य प्रदेश वहाँ की स्पेशलिटी है पोहा. इन बिहार पीपल हैव लिट्टी चोखा. इन राजस्थान दाल बाटी. एंड इन महाराष्ट्र पीपल लव टू हैव वड़ा पाव. Okay, so people living in different parts of the world also eat different kinds of food. Here are some famous food items of different places. तो हमने पहले तो अपने कंट्री के रीजन्स के बारे में बोला. Now let's look at the people of different parts of world, what they have. Like in Thailand they have somtam. Okay, in Japan they have sushi. In Italy pizza is famous. Okay, in China, people love to have spring rolls. Okay, now food according to availability of food item. Okay, जो food items available है उसके हिसाब से food. Okay, people have developed different eating habits depending on the availability of food. So people living in eastern and southern regions of Bharat consume rice in some form or the other. सो जो ईस्ट में रहते हैं या साउथ में रहते हैं ज़्यादा करके राइस खाते हैं. पीपल लिविंग नियर द सी कोस्ट ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड सी फूड. Okay, people living in northern and western regions mainly have bread items like chapati, naan, paratha, kulcha, etc.
which are made from wheat or other forms of wheat. Okay, so ये अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स हैं जो उस रीजन में ग्रो होते हैं, ज़्यादा ग्रो होते हैं. So on the basis of that they have those food items. Now people do not eat different things but they make variety of food items from the same thing. ओके तो लोग क्या करते हैं, एक ही आइटम से, जैसे चावल से, फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक पुलाव, यू कैन मेक बिरयानी, पीपल मेक डोसाज ऑल्सो. सो दे मेक डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम द सेम food, okay, or the food grains, right? Okay, now do it yourself. Write what can be prepared from rice and wheat. Okay, राइस से हम पुलाव बना सकते हैं, व्हीट से हम चपाती बनाते हैं. ऐसे अलग अलग चीज़ें जो हम राइस से और व्हीट से बना सकते हैं, you have to mention that. Okay, now food according to age group. Babies drink only milk till the age of 6 months. Milk is a complete food and needed for the growth of the baby. After 6 months, they are given semi-solid food like mashed banana, khichdi, boiled dal, custard, etc. A child of 1 year is given all the things that an adult eats. So, छोटे बच्चे जो होते हैं, the newborn babies and all, उनको अपने एज के अकॉर्डिंगली खाना देते हैं. ओके, तो पहले 6 महीने तो सिर्फ दूध पे होते हैं वो. इट कैन बी मदर्स मिल्क और इट कैन बी द टिन्ड मिल्क दैट दे हैव बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन मे बी, बट ज़्यादा करके जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने तक सिर्फ मिल्क पे होते हैं, ऑन देयर मदर्स मिल्क स्पेशली. ओके, आफ्टर दैट वो खाने लगते हैं सेमी सॉलिड फूड, जिसमें आता है मैश्ड बनाना, खिचड़ी, बॉइल्ड दाल, ओके, कस्टर्ड, ये सब चीज़ें. और जब 1 साल के हो जाते हैं तब तक वो धीरे धीरे सारी चीज़ें चखने लगते हैं. ओके, सो अडल्ट जो खाते हैं उसमें से वो खाना खा सकते हैं. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद देयर टीथ. दे आर नॉट एबल टू ईट और चू हार्ड फूड. Okay, most of them are not allowed to eat sweet and spice and oily foods. They should be given soft food cooked with little oil, spices and sugar. Like Vibhuti's grandmother eats chapati soaked in dal. Anurag's grandfather eats dalia cooked in milk. Okay, so जैसे छोटे बच्चे हो गए वैसे old people होते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनके दांत गिर जाते हैं. Okay, or they are not so strong enough to chew the food properly, the hard food properly. At the same time, maybe they have some kind of diseases or they are not well, so they are not so they cannot tolerate the spices or sugar or oil, a lot of oily food. Okay, तो उसके हिसाब से वो अपना खाना खाते हैं. Okay, now let's find out what do children and old people eat in your family. आपको ये find out करना है आपके घर के बच्चे, छोटे बच्चे और आपके जो elders होते हैं, old people होते हैं, वो क्या खाते हैं. Okay, now what is a balanced diet? A diet which includes energy giving, body building and protective foods in the right amount is called a balanced diet. Okay, so balanced diet क्या होता है, जिसमें आपको हर चीज़ इन इक्वल क्वांटिटी में होती है. ओके, जैसे एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द एनर्जी गिविंग फूड. फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, राइस, ब्रेड, sugar, potato, etc. contain carbohydrates. Now, carbohydrates जो होते हैं, they give us energy to work and play. Okay, body building food. Food items like milk, milk products, meat, fish, pulses, etc. contain proteins. Proteins help us to grow and make our body strong. Okay, so ये हो गए body building food. Now protective food. Fruits and vegetables are called protective food. They give us vitamins and minerals which protect us from diseases. Okay, so except these food items, we should also drink plenty of water. Water helps our body to digest the food we eat. It also removes waste from our body. So बच्चों, अगर आपके खाने में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आपके खाने में मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट आ जाता है, या फिर शुगर, पोटैटो सब इक्वल अमाउंट में आता है या इन अ लिमिटेड क्वांटिटी आता है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, एट द सेम टाइम
आपको हमेशा सब बोलते होंगे पानी पी लो, पानी पी लो, पानी, बिकॉज वाटर इज very essential. Okay, it helps to digest the food that we eat. Okay, at the same time it also removes the waste from our body. Clear? So now drink a lot of water. Now let's look at healthy eating habits. Always eat fresh food items. Eat fresh fruits and wash them before eating. Avoid eating packed food items. Avoid eating junk food and street food. Keep the food items covered at your home. Okay, drink at least 8 glasses of water every day. ठीक है? Now let's look at a fact zone. Amul is an Bharatiya company that makes milk products. It is jointly owned by over 3 million dairy farmers. It receives almost 15 million liters of milk every day. ये अमूल जो है ये based है गुजरात में. Okay? Now, let's remember the important things that we have learnt in this chapter. Some people eat plant food and they are called vegetarians, while some eat animal food also, and thus they are called non-vegetarians. People of different states like to eat different kinds of food. A diet which includes energy-giving, body-building and protective food in the right amount is called a balanced diet. Okay, now let's look at the new words. Vegetarian, one who eats plant food. Non-vegetarian, one who eats animal food. Cereals are grass-like plants that farmers grow in fields. Okay, so remember these words and the meanings from the word bank. Okay, now quickly practice this by doing the back exercises.